Meetings and brief biodata of members whose birthdays fall on a particular day is also being displayed on the Sansad TV regularly. So we all wish him very happy birthday, Ji. Namaskar. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमनदीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमटीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देवराज जी। Sir, I rise to present the 257th report in Hindi and English of the Committee on Subordinate Legislation as mentioned in today's list of business against my name. Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Shriman Ram Rao Sagaram Watkude ji. Sir, I rise to lay the final action taken the statement of the government on the recommendation and observation obtained in the chapter 1st and 5th of the second report of the Lok Sabha Department-related Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendation and observation contained in the 21st report, 17th Lok Sabha of the Committee of the Smart Cities Mission and elevation listed against my name in today's list of the business. Shriman Jagat Prakash Nadda ji to move a motion for appointment of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar. Honorable Chairman, sir, I rise to move that in pursuance of Section 4, bracket G, read in Section 6, bracket 3 of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institutes of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, in the vacancy caused due to the retirement of Srimati Mamta Mohanta from the membership of Rajya Sabha on 2nd April 2026, subject to the provision of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Dr. L. Murugan to move a motion for appointment of 2 members to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Law Amendment Bill 2024 in the vacancies caused by the retirement of Sri Saket Gokhale and Sri Bhubaneswar Kalita from the membership of the Rajya Sabha, and communicate to the Lok Sabha that the names of the members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee, and resolve that Sri Manmohan Samal and Srimati Sagarika Ghosh be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Only 1 minute. Ji, only 1 minute. I am coming to you. Please, 1 minute. I am coming to you. I have to inform members that the communication has been received from Srimati P.T. Usaji
member stating that she is unable to attend the sittings of the current 271st session of Rajya Sabha from 20th July to 4th August 2026, since she has been entrusted with the responsibility of leading Indian contingent to Glasgow to 2026 Commonwealth Games. Does she have the permission of the House for remaining absent from 20th July to 4th August 2026 during this current 271st session of Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Yes, Ji. धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है? तो मौका आपने दिया। कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయితే చూస్తున్నాము. లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు కూడా మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి వాయిదా పడింది. విపక్షాల ఆందోళనతో ఈ వాయిదా పడడం మనం చూస్తున్నాము. आज 12 बजे तक के लिए स्थगित। पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना, जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे,